नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल टाइम इंजीनियरिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LeetCode प्रॉब्लम नंबर 5 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में ये कंप्लीट करूं क्योंकि मेरे पिछले वीडियोस जो थे वो बहुत बड़े हो गए थे। तो सुपर लेंथी नहीं बनाएंगे हम इस वीडियो को, शॉर्ट एंड स्वीट ही रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। So, given a string S, return the longest palindromic substring in S. Like for example, if we have BA, BAD, then how many palindromes do we have over here? We have BAB, then after BAB, we have ABA, right? So we have two palindromes and their length is 3. So we need to output not just the length, but also the palindrome itself. तो हमारा आंसर जो होगा वो इस केस में BAB या फिर ABA होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम होता क्या है? Palindrome is like when we start in reading that particular string from left to right, that is exactly the same when we read it in the reverse order from behind to the front, right? So, for example, if I have the word Malayalam, so Malayalam, so this is Malayalam and this is Malayalam, right? So it's exactly the same, okay? Then we have example 2, S equal to CBBD, in which BB is the palindrome. Okay, so a single letter can also be a palindrome. तो अभी देखते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने पैलिंड्रोम्स हैं। तो फर्स्टली यू हैव ए ए ओवर हियर, देन यू हैव डी ए ए डी ओवर हियर, यू हैव बी आर बी ओवर हियर, यू हैव ए बी आर बी ए ओवर हियर, and then you have this longest palindrome B A D A A A D A B, right? So this is another palindrome. तो ये आई थिंक लेंथ 8 का है, 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम जो है वो लेंथ 8 का है। तो हमें आउटपुट हमारा होगा बी ए डी, बी ए डी, ए ए बी, ए बी, दिस विल बी आर आउटपुट। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको सॉल्व कैसे करें, राइट? तो एक हो सकती है ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है, और दूसरा देखते हैं कोई स्मार्ट वे हमें मिलता है क्या इसको सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं। तो अब हमने इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझा है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। तो इसे ब्रूट फोर्स वे में कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स वे क्या है? ब्रूट फोर्स वे ये है कि इस स्ट्रिंग को ले लो, इसके सारे सबस्ट्रिंग्स निकालो, ठीक है, और हर सबस्ट्रिंग के लिए ये चेक करो कि वो सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। तो ये है ब्रूट फोर्स मेथड। तो जैसे अगर मुझे सारे सबस्ट्रिंग प्रोड्यूस करने हैं तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ बी से, विच इज माई फर्स्ट सबस्ट्रिंग, देन बी ए, देन बी ए बी, देन बी ए बी ए, देन बी ए बी ए डी। ये होने के बाद मैं फिर नेक्स्ट लेटर पे जाऊंगा, ए से स्टार्ट करूंगा। तो ऑल माई सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ए वुड बी ए, ए बी। मैं पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी कंसिडर किया है बी जब मैं कर रहा था तब। सो ए बी ए बी ए डी। ये होने के बाद मेरे बाकी के सबस्ट्रिंग होंगे बी ए, सॉरी बी सबसे पहले, फिर बी ए, फिर बी ए डी, एंड देन फिर ए, देन ए डी, एंड देन फाइनली दिस डी। सो दोज वुड बी माई सबस्ट्रिंग। अब ये करने के लिए मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ओ ऑफ एन स्क्वायर, एंड देन उसके बाद मुझे ये चेक करने के लिए कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो लेट्स से मेरे पास स्ट्रिंग है एस, तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा रिवर्स ऑफ एस, रिवर्स ऑफ एस, ठीक है, एंड इफ दिस इज इक्वल देन वी हैव अ पैलिंड्रोम, इफ दिस इज नॉट इक्वल देन वी डोंट हैव अ पैलिंड्रोम, राइट? तो ये करने के लिए क्या मेथड, रिवर्स करने के लिए क्या मेथड यूज कर सकते हैं?
तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास लेट्स से यही स्ट्रिंग है BABAD, तो मैं एक पॉइंटर L रखूंगा यहाँ पे, ठीक है, फिर एक पॉइंटर R रखूंगा यहाँ पे, और इन दोनों को स्वैप करूंगा। फिर उसके बाद मैं करूंगा L++ और R माइनस माइनस, फिर इन दोनों को स्वैप करूंगा। ठीक है, तो द फर्स्ट whatever was at the first position will come to the last position, then whatever was at the second last position will come to the second position। ठीक है, ऐसे करते करते हम L और R को मूव कराएंगे और स्वैप करते जाएंगे और सेंटर तक पहुंचेंगे। तो जब L इक्वल टू R होगा या फिर जब L ग्रेटर देन R होगा, तब हम करेंगे स्टॉप, एंड देन हमें रिवर्स तो मिल जाएगा। फिर रिवर्स को हम ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ये करने के लिए मुझे एक बार पूरी जो स्ट्रिंग है वो ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O(n). तो O(n²) सारे सबस्ट्रिंग जनरेट करने के लिए, और O(n) ये चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो इन टोटल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O(n³), जो इतनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, राइट। तो क्या इसका और एफिशिएंट सॉल्यूशन हम बना सकते हैं? तो आइए देखते हैं। तो क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को और सिंपल वे में करने की कोशिश करें। तो अगर मैं एक पैलिंड्रोम लेता हूँ, लेट्स से BAB, ये मेरा पैलिंड्रोम है BAB। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं A से स्टार्ट करूँ और एक प्लेस लेफ्ट जाऊँ, एक प्लेस राइट जाऊँ, तो क्या वो सेम होना चाहिए? लेट्स से मेरे पास है मलयालम। अब इसका सेंटर क्या है? Y है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं Y से स्टार्ट कर रहा हूँ, Y एज माई सेंटर, एंड लेफ्ट जा रहा हूँ, तो यहाँ पे A है तो राइट पे भी A होना चाहिए, अगर ये पैलिंड्रोम है तो। हाँ, बिल्कुल। फिर मैं और एक प्लेस लेफ्ट जाता हूँ, तो L और L, ठीक है। तो एक प्लेस लेफ्ट, एक प्लेस राइट, मतलब मेरा अगर पॉइंटर है L और R, तो पहले L यहाँ पे था और R यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे है और R यहाँ पे है, फिर से L यहाँ पे है और R यहाँ पे है। नाउ इज S ऑफ L इक्वल टू S ऑफ R? यस। तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर L यहाँ पे आ गया और फिर R यहाँ पे आ गया। इज S ऑफ L इक्वल टू S ऑफ R? द आंसर इज यस, क्योंकि दोनों की वैल्यूज m है। तो मेरी जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है और अदर स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, वो बन गई है मलयालम, M to M, पूरी की पूरी। ठीक है, तो मैं सेंटर से स्टार्ट करूंगा और चेक करूंगा लेफ्ट पे क्या लेफ्ट वाला एलिमेंट और राइट वाला एलिमेंट सेम है क्या। अगर है तो लेफ्ट वाला और लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, राइट वाला और राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं यही सेम चीज इसके लिए करूंगा, हर एक एलिमेंट के लिए करूंगा। तो अगर मेरे पास BABAD है, तो आई विल कंसिडर B as a center in the first iteration, then I will consider A as a center, then this B as a center, then this A as a center, and then this D as a center। ठीक है, और ऐसे करते करते मैं स्टोर करूंगा मैक्सिमम लेंथ जो मुझे मिली है पैलेंड्रोम की, वो मैं स्टोर करूंगा, और जो सबस्ट्रिंग है करंट मेरा आंसर है वो भी स्टोर करूंगा। सो नॉट जस्ट द लेंथ बट ऑल्सो द एक्चुअल सबस्ट्रिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन एज द आउटपुट, ये भी मैं स्टोर करने वाला हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि व्हाट इफ द पैलिंड्रोम इज इवन, राइट, इट हैज इवन नंबर ऑफ लेटर्स। अगर ऐसा है तो सेंटर तो ऑड को ही होता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम बीच के दो कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? बीच के दो। तो अगर मेरे पास BABAD है, ठीक है, लेट्स से आई हैव BABAD, अगर मेरे पास ये है तो मैं क्या करूँगा कि, और अगर ये लेता है CBBD, तो उस केस में मैं ये एक सेंटर लूंगा या फिर ये एक सेंटर लूंगा और फिर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि
मेरे जो सारे के सारे इवन नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स है वो भी मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बीच में दो एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा हूँ। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि मैं n इटरेशंस कर रहा हूँ, राइट? तो n चॉइसेस ऑफ सेंटर्स है मेरे पास, ठीक है, और हर चॉइस के लिए मैं ऑलमोस्ट वर्स्ट केस में पूरी एरे को ट्रैवर्स करूंगा, तो n इंटू n विल बी इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n इंटू n और o ऑफ n स्क्वायर। तो ये इवन वाला जो लॉजिक है वो बस हमें ध्यान रखना है। इसका और एक एग्जांपल मैं देता हूँ थोड़ी ही देर में। ओके, सो लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है DAAD। ओके, सो ये एक पैलिंड्रोमी है, जैसे कि आप देख सकते हो, DAAB, ठीक है। सो दिस इज अ पैलिंड्रोम and I have another string CBABC. So this is an odd palindrome and this is an even palindrome, ठीक है। सो इन दोनों को चेक करने के तरीके ये अलग अलग होने हैं। यहाँ पे क्या होगा कि मेरा आई सबसे पहले सी पे होगा एज अ सेंटर, फिर बी पे होगा एज अ सेंटर, फिर ए पे होगा एज अ सेंटर, राइट? तो मेरा आई लेट से अभी ए पे है, ठीक है। तो मेरा एल जो इनिशियलाइज होगा वो आई पे ही इनिशियलाइज होगा, और जो आर इनिशियलाइज होगा वो आई पे ही इनिशियलाइज होगा, ठीक है। इफ आई वांट टू चेक फॉर ऑड पैलिंड्रोम, इफ आई वांट टू चेक फॉर इवन पैलिंड्रोम, तो उस केस में मेरा जो आई है वो लेट से इस वाले ए पे है और ये मेरा आई प्लस वन है, ठीक है। तो मेरा जो एल है वो आई पे इनिशियलाइज होगा, ठीक है, बट मेरा आर जो है वो आई पे इनिशियलाइज नहीं होगा, वो यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, आई प्लस वन पे इनिशियलाइज होगा, ठीक है। ये बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी इवन और ऑड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनिशियलाइज हम कैसे करते हैं इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी इसकी चेकिंग सेम ही होगी। बाकी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इज एस ऑफ एल इक्वल टू एस ऑफ आर। अगर यस है तो एल लेफ्ट साइड में जाएगा, आर राइट साइड में जाएगा, और यहाँ पे भी सेम होने वाला है। तो बस इनिशियलाइजेशन है, आई इक्वल्स एल एंड आई प्लस वन, सॉरी एल इक्वल्स आई एंड आर इक्वल्स आई प्लस वन। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इवन पैलिंड्रोम्स एंड odd palindromes, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट द इनिशियलाइजेशन कि हाउ यू आर इनिशियलाइजिंग योर एल एंड आर, राइट। तो उसके इस केस में क्या होगा कि ए है, एस ऑफ एल इज एस ऑफ आर, तो इट इज करेक्ट, देन वी विल शिफ्ट एल टुवर्ड्स लेफ्ट and L will point over here to D and R will point to D, then we'll check again, then yes, S of L is S of R, so then we'll say that okay, DAAD is also a palindrome। और odd case तो हमने डिस्कस पहले ही की थी, ठीक है। पहले ये और ये दो कंपेयर होंगे, फिर ये और ये दो कंपेयर होंगे, ठीक है, और फिर हम डिक्लेयर करेंगे कि सी बी ए बी सी इज द लॉन्गेस्ट पैरेंट, राइट। सो इनिशियलाइजेशन का फर्क है, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल इवन पैलिंड्रोम्स एज वेल। तो जब ये सब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये वाला चेक और ये वाला चेक, यानी कि इवन पैलिंड्रोम का चेक और ऑड पैलिंड्रोम का जो चेक है वो साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। तो पहले मैं दिस पहले मैं ये सोचूंगा कि ठीक है, सेंटर जो मेरे पास है क्या उससे एक ऑड पैलिंड्रोम बन सकता है, और फिर ये मेथड यूज करूंगा। फिर उसी को सेंटर मतलब आई बिना चेंज किए, आई और आई प्लस वन को सेंटर मान के मैं ये देखूंगा कि क्या इससे इवन पैलिंड्रोम बन सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर आई, फॉर दिस पर्टिकुलर आई, ठीक है। तो मैं पहले ऑड पैलिंड्रोम बन सकता है क्या ये चेक करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि इवन पैलिंड्रोम बन सकता है या नहीं, ठीक है। So let's code this in C++. So firstly, what we are going to do is create a string res, right? And then an integer res length, which would be initially 0. Then a for loop, integer I equal to 0, I is less than s dot length, I plus plus. So we need to
select the I first for expanding from the center. Then uh, we will define integer L comma R equal to I comma I, and now we can expand from the center. So how are we going to do that? Firstly, we will check if L is within limits. So L has to be greater than equal to 0, and R has to be less than s dot length, and also it should be a valid substring, right? That was another condition. So s of L should be equal to s of R. Now if this is true, what we are going to do is firstly check if R minus L plus 1 beats rest length or not. Okay, so once we check that, if it beats rest length, then rest will be s dot substring L comma R minus L plus 1, and rest length will be R minus L plus 1, right? Finally, what we are going to do is move L towards left and R towards the right, so that we are expanding from the center for more, and we are checking if we can include more elements in our palindrome. So L minus minus and R plus plus. Okay, so that's what we are going to do. Now what is left is that we have to do the same thing for, okay, so let me just check. Okay, we need to do the same thing for R being I plus 1, and like so, and then finally we need to return the rest. So we will return the rest right here. Yes. Okay, let's see if we get an error. Compilation error over here. I knew this was going to happen. So what we need to do is just separate this L equal to I, integer R equal to I. Let's also change this L equal to I, R equal to I plus 1. Okay, we are going to get an error. Okay, so we are getting a wrong answer. So are we returning rest correctly? Yes, we are. Are we updating everything correctly? Okay, let's see what is the problem. So there was a problem in the code. So this rest length should be rest length equal to R minus L plus 1. I accidentally, instead of pressing the equal to sign, press the minus sign. So let's just correct that and see if this runs. So it is running. Now let's submit it. Okay, so it got submitted as well. So this was the solution in C++. Okay, so let's code this in Java. तो सबसे पहले चीज हमें क्या लगेगी, एक स्ट्रिंग लगेगी res, which will be an empty string. फिर एक इंटीजर लगेगा res length, which will be 0, and then for integer I equal to 0, I is less than s dot length I plus plus, and then what we are going to do is initialize L and R for that particular I. So int L equal to I, int R equal to I. Okay, now we will run a while loop. So while uh, L is greater than equal to 0 and
r is less than s dot length, and s dot character at n equal to s dot character at r, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए ताकि वो पैरेंटोम हो. While this is true, if r minus l plus 1 is greater than rest length, then we need to change the rest. S dot substring l comma r minus l plus 1, and rest length would be r minus l plus 1. Finally, we will do r plus plus and l minus minus. Now let's just take this entire logic and copy paste it with l being I and r being I plus 1. Okay, and then finally we have to return. So let's return right here, return res. Let's see. Expected. Okay, so this has to be and, so this also has to be and. Yeah. So we are getting the wrong answer. So let's see why this is happening. Okay, so we made a small mistake over here. हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे एक इंडेक्स होना चाहिए s डॉट सबस्ट्रिंग में, राइट. तो यहाँ पे r माइनस एल प्लस वन की जगह सिंपली r प्लस वन होना चाहिए, और यहाँ पे भी r माइनस एल प्लस वन की जगह r प्लस वन होना चाहिए. तो हमें लेंथ नहीं प्रोवाइड करनी, हमें सिर्फ इंडेक्स प्रोवाइड करना है कि कहाँ तक हमें वो सबस्ट्रिंग चाहिए. ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं एक बार. तो ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया है. सो दिस वाज द सॉल्यूशन इन जावा. ओके, सो नाउ वी विल बी कोडिंग दिस इन पाइथन. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो लेट्स पुट अ फॉर लूप, और इवन बिफोर दैट let's define a few things. Let's define our empty string res and res length as 0. So this will be our final length of the maximum string substring, and it would be the length of res basically. So res is basically the result, right? Now for I in range length of s. So for I in range of length of s, let's put a bracket over here. While, so L comma R should be equal to I comma I, right? So we are initializing L and R to be at I, and now we will expand from the center. So now while L is greater than equal to 0 and R is less than length of S, and S of L equal to S of R, which means while the palindrome is valid, right? So if this is the case, what do we have to do? Then we check for the length. So if R minus L plus 1
just a minute, plus 1. If this is greater than res length, then we have to change our length. So we change our result substring, and now res length will be equal to r minus l plus 1, right? After we do this, we will do l equal to l minus 1. We will shift it to the left, and r equal to r plus 1. Now, if in the next iteration this is not a palindrome, that is s of l is not equal to s of r, we will just break out of this, right? But this we have done for even, right? And we can see that there's a for loop, and inside that for loop we have a while loop. So n on the outside and on the inside, n square is the time complexity. Now we'll keep another loop over here. So let's just copy paste this internal part. Okay, this has to be r plus 1, and I think that's the only change that we have to make. So let's see. Oh, we forgot to return. So let's return res. Okay, let's see if this works. Okay, so this was a solution in Python. So we have let res equal to empty string and let res length equal to 0. Now for let I equal to 0, I is less than s dot length I plus plus, while, now this is important, while L, okay, first we need to define L and R. So let L equal to I, let R equal to I. And now we can say while L is greater than equal to 0 and R is less than S dot length and S of L equal to S of R, while all of this is true, we are going to check if R minus L plus 1 is greater than res length, and if it is, then res will be S dot substring L comma R plus 1, and res length will become R minus L plus 1, and then finally we'll do a L minus minus and R plus plus. Okay, so now we have to do this same thing. Okay, why is this over here? Okay, incorrect places. Now the correct place has appeared, and okay, so this will come here, and this will become R plus 1. We have already defined R and L, so we will not include that. And just before we end this, we need to return res. So then we'll just return res. Let's see if this works. So the solution has been accepted. Now let's submit it. And we have successfully submitted the solution. So this was the code in JavaScript. Okay, तो हमने इस प्रॉब्लम को O of n square में सॉल्व किया है. So O of n square टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, राइट? क्यों? क्योंकि हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं और n एलिमेंट्स को ट्राई आउट करेंगे, एरे में n एलिमेंट्स है तो। और वर्स्ट केस में, हर एक केस में, मतलब हर एक i के लिए हमारा l और r ये n तक जा सकता है, मतलब इसकी जो लिमिट है वो स्प्रेड आउट होते 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 n तक पूरे एरे को कैप्चर कर सकता है, राइट? तो इसीलिए O of n square इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? तो क्या हमने इसमें कोई भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है? नहीं, हमने सिर्फ थोड़े बहुत वेरिएबल्स यूज किए, उसके अलावा हमने कुछ ज्यादा यूज नहीं किया। सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज O of 1 विच इज कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या हो सकता है, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जीन्स होते हैं, ए टी सी जी, राइट? ए टी सी जी इज द कोड आउट ऑफ विच आवर डीएनए इज बिल्ट, ठीक है? तो इसमें पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स हमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। लेट्स से ए टी सी जी है, तो ए टी सी जी सी टी ए, ठीक है, ये एक पैलिंड्रोम बन गया। सी जी सी, ये एक पैलिंड्रोम बन गया। सी जी सी टी जी, ठीक है, अभी ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है? तो डिटेक्ट करना कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज उस जीन के बारे में हमें बताता है। तो इसका एप्लीकेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हो सकता है, ठीक है? तो और हम इस पे क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इसके वेरिएशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला वेरिएशन जो है वो है कि काउंट नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स। काउंट नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स, ये एक हो सकता है कि अभी तक तो हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रिंग्स हैं, बट हमने उनमें से जो मैक्सिमम था वही चूज किया कि हम वही रिटर्न करेंगे, ठीक है? बट एक है कि पूरा काउंट ही दे दो कि कितने पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स है इसमें। तो एकदम स्लाइट वेरिएशन है, एक बस सम का वेरिएबल इंक्लूड करने के बाद आई थिंक है ये जो सम है वो इजीली हो जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट वेरिएशन इज इंस्टेड ऑफ अ सबस्ट्रिंग वी हैव अ सब सीक्वेंस। तो सबस्ट्रिंग जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए, बट जो सब सीक्वेंस है वो कंटिन्यूस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इस केस में ए टी सी जी ये सबस्ट्रिंग है, ए टी और फिर सी टी, ए टी सी टी ये जो है ये सब सीक्वेंस है, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, ठीक है? लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ इस प्रॉब्लम के वेरिएशन हो गए, ये आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो ताकि सबका नॉलेज बढ़े। एंड स्पेशली ये जो है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, ये हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए आप ट्राई कर सकते हो कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? और सबसीक्वेंस और सबस्ट्रिंग में ये जो फर्क है उससे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ जाती है जब हम सबस्ट्रिंग से सबसीक्वेंस पे जाते हैं, तो ठीक है, या बढ़ती है या नहीं, ये आपको ही देखना है, राइट? तो ट्राई करें इन वेरिएशंस को। एंड अभी के लिए हमारा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। So thank you guys for watching this video till the end. I hope this video was helpful for you. Please like, share, subscribe and comment, and let's meet soon. Thank you.